कीज़लर और मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कैसे हम ऐसे गांव में रह सकेंगे जहाँ बाहर से किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना हो। ये मेरे नज़दीक जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ ये बहुत ज़रूरी चीज़ है हर मुल्क में, लेकिन ख़ास कर पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में हमें शहरों से निकलना चाहिए। और अगर हम आज़ाद रहना चाहते हैं, मतलब जो हम करना चाहते हैं हम खुद कर सकेंगे, नहीं तो पता नहीं कौन शैतानी लोग हमारे शहरों पर कब्ज़ा और करते रहेंगे और हमें वहाँ रहने नहीं देंगे। अगर हम अल्लाह का नाम लेने चाहते हैं, अल्लाह की खिदमत करना चाहते हैं, दूसरों की खिदमत करना चाहते हैं प्यार से, ये नामुमकिन हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता से। आहिस्ता आहिस्ता से नहीं, जल्दी जल्दी से ये ज़्यादा हो जाएगा, होता रहेगा शहरों में। ये दज्जाल का प्रोग्राम है कि पूरी दुनिया को अपने कब्ज़े में लाना, और वो ये कैसा करना चाहता है? टेक्नोलॉजी के ज़रिए, ख़ासकर गूगल। पूरी दुनिया को अपने कब्ज़े में लाना मतलब लोगों को, इंसान के मन को अपने काबू में लाना। तो इससे बचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम शहरों से निकलें और गाँव में रहने जाएं। ऐसे गाँव जहाँ बाहर से किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना हो। मतलब है हम जो हमको खाना है, जो कपड़े हमें पहनना है, जो कुछ हमें चाहिए, वो सब कुछ गांव के अंदर ही बनता है। मतलब है सेल फोन। सेल फोन गांव में नहीं बनता है। एकदम नहीं, आहिस्ता आहिस्ता से हम इन सेल फोनों से भी बचना होगा, क्योंकि आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, इन इंटरनेट के ज़रिए शैतान कितने ज़्यादा तेज़ी से कब्ज़ा पाते जा रहा है पूरी दुनिया को। अच्छा, बस मैं यही बात करना चाह रहा था। दूसरी बात ये बहुत ज़रूरी है कि मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोगों को इन गाँवों में साथ में रहना चाहिए। सब प्यार, एक ख़ानदान जैसे सब लोग अ, प्यार से दूसरों से बात करें, मिलें और साथ काम करें। अपना जो खाना है उसको तैयार करना है, उसको उग, उग, उगना, चाहे वो चावल या गेहूँ है, सब्ज़ी या जो कुछ हम खाते हैं उसको हम अपने गांव के अंदर ही पालें और तैयार करें। ये बहुत ज़रूरी है हर ज़िले में, बल्कि ऐसे एक गांव की ज़रूरत है। तो आप सबसे दरख्वास्त है, मैं दुआ भी करता रहता हूँ कि सबको अल्लाह पाक अक्ल दे, ताकत दे कि हम इस काम में हिस्सा लें। अच्छा, हम देखेंगे किसी के कोई कमेंट्स हैं। जाहिद चौधरी से अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू। मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अब तक ज़िंदा हूँ, अब तक अल्लाह का नाम ले रहा हूँ। और राना लियाकत अली जानी साहब, लव फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। थैंक यू वेरी मच, लव टू यू इन जम्मू एंड कश्मीर टू। आई नो आप बहुत मुश्किल, you're in a very difficult situation, but Allah is all powerful. Try to develop your self-sufficient villages there also. It's easy. It's not so hard as you may think. Somebody said it's impossible in my last chat. No, it's not impossible. Uh, if you're forced, then you would do it. Now you're not forced yet. Now we have the chance to do it voluntarily. But soon we won't be able to live in the cities if we want to be peaceful and free to do what we want to do in terms of worshiping God and loving each other as members of one family. We can grow our own food. That is what we will do. Okay, Azhar Gujar says, Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum salam. Azhar Gujar ji. And he goes on, सर मैं आपकी बातों से बहुत मुतासिर होता हूँ
کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمے یہ کام لگایا ہے کہ لوگوں کو بتاؤ. شکریہ. آپ بھی دوسروں کو یہ بھی بات بتائیں کہ گاؤں میں رہنا، گاؤں میں جو کچھ رہنے کے لیے ضروری ہے، خاص کر کھانا اور کپڑا، وہ گاؤں میں ہی تیار کیا جائے. ایسے گاؤں کی ضرورت ہے، اور وہاں شانت زندگی ہو سکتے ہیں. اچھا ہامنا شمم، السلام علیکم. When are you coming back to Pakistan? I do not know. Rana Liaquat Ali Jani goes on. جموں کشمیر میں امن کیسے آئے گا؟ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ جموں اور کشمیر میں اور پوری دنیا میں جب مختلف مذاہب کے لوگ مل کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، صرف ایک زبان میں نہیں، ایک مذہب کے دعا سے نہیں، ذکر ہر مذہب میں ہے، تو مختلف مذاہب کے لوگ جب ملتے ہیں اور اللہ کا نام لیتے ہیں، یہ امن کا بنیاد ہے. تو جموں اور کشمیر میں بھی یہ ہو سکتا ہے، پاکستان میں، امریکہ میں، پوری دنیا میں. یہی مجھے بتایا گیا، خاص کر اسرائیل پالسٹائن میں بھی امن آئے گا جب مسلمان اور یہودی لوگ وہاں مل کر اللہ کا نام لیتے ہیں. جب یہودی لوگ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے شروع کرتے ہیں اور مسلمان لوگ سنگاگ میں یہودیوں کے ساتھ یہودی دعا بھی پڑھتے ہیں. تو ایسے ہی پاکستان میں خاص کر جب مسلمان اور سکھ لوگ مل کر اللہ اللہ ایک اومکار بولتے ہیں. اور آپ جموں اور کشمیر میں آپ کچھ ہندو لوگ بھی ہیں اب تک وہاں، ان کے ساتھ ملو، ان کو بتاؤ ہم مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے، آپ بھی مانتے ہیں کہ رام ایک ہی ہے، تو ہم مل کر اللہ کا نام اور رام کے نام لیں بس. یہ this is how peace will come in Jammu and Kashmir and everywhere. Hamna Shamim says, can you help me with my psychological and spiritual problems, sir? I am numb from inside and out. I have stopped feeling anything and away from Deen. Can you suggest me? You must pray from your heart. As you are asking me to help you, from the depths of your heart, beg God to help you. And God will. He is helping you. He will continue to help you. So that's the first thing, most important way, easy way to start, is just pray very, very sincerely. Allah, 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 Allah. It must be sincere from the depths of your heart. That's the beginning to pray, and continue hearing messages from sincere servants of God, and associate with other people who are also sincerely trying to understand and serve God. That's the suggestion I can give you. Okay, Babaji Razan Bhatt says, Aapko sehat de from Lahore. Thank you very much. Shukriya. Allah Pak aapko bhi sehat de لاہور میں. لیکن تھوڑا لاہور سے باہر جاؤ، کوئی گاؤں ڈھونڈو جہاں آپ گاؤں والوں سے بات کر کے ان سے بات ایسے کریں کہ ہم آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہم سیکھنا چاہتے ہیں کہ کیسے اپنے کھانا ہمارے گاؤں میں کھیت کریں، اور وہ آپ کو مدد کریں گے، آپ ان کو بھی مدد کر سکتے ہیں. اور ایسے یہ سیلف سفیشینٹ ولیج پروگرام آپ لاہور کے نزدیک بھی کہیں قائم کریں. اچھا اقرا حسن says, Assalamu alaikum sir, good to see you. Thank you very much. Nice to have you with us too. Joshi BC73 says, Hi Alan, Ram Ram. رام اللہ کا نام ہے. رام کا مطلب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمیں کیا دیتا ہے؟ خوشی. رام
राम मतलब जो खुश है, अल्लाह खुद खुश है, मालिक खुद खुश है, और वो हम सबको खुशी देने वाला है। ये राम का मतलब है। तो राम 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 राम, अल्लाह 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 अल्लाह, ये तरीका है जिससे हम खुश हो सकते हैं। अच्छा, नूरी कह रही है अस्सलाम वालेकुम, आपसे दुआ के दरख्वास्त है। चश्मे नहीं है अभी मेरे साथ, ये उर्दू में जब लिखा जाता है बहुत छोटा आता है मेरे फ़ोन में, उसको पढ़ना मुश्किल है। इतने मसला, इतने मसला के लिए अफगा अफ़गानिस्तान के लिए आप तालिबान को आगाह कर दे। अफ़गानिस्तान है अच्छे, और अफ़गानिस्तान में अच्छे तरीके से हो सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, हम तो दुआ कर सकते हैं अफ़गानिस्तान के लिए भी। ज़िक्र करो अल्लाह अल्लाह। अफ़गानिस्तान में भी अमन की ज़रूरत है। तालिबान को भी अकल दे कि कैसे अल्लाह को याद करने से, अल्लाह के नाम लेने से और दूसरों की खिदमत करने से। अल्लाह का नाम लेने का मतलब है अल्लाह के प्यारों से प्यार करो, अल्लाह के बंदों की खिदमत करो। ये प्यार से, मोहब्बत से, यही है असली इस्लाम, ये है असली दीन। हर मज़हब में यही सिखाया जाता है। अच्छा, Rana Liaquat Ali Jani, every religion is separated from each other by batil forces in this time. Yes, very true. Therefore, we must come together in love, in harmony, in peace, by prayer. We must come and pray together. That is the way to counteract these batil forces. Joshi BC, Ram Nam gives moksha, salvation. Yes, Ram Nam gives moksha, Allah Nam gives moksha, Adonai Nam gives moksha, Ek Omkar Nam gives moksha. The Nam gives moksha, yes. Every name of God has so much power to give salvation. Simply repeating names of God brings not only moksha, more than moksha. Moksha means liberation, salvation. Even more than that you get from the names of God. You may think there's nothing more than that, but there is. More than moksha is love. Love is the highest. Prema pumarto mahan. Dharma, artha, kama, moksha, and prema. It's the fifth stage of life is prema. It is beyond moksha. So by Ram Nam you will get prema also. Okay, Zila Baloch says, Assalamu alaikum Babaji, wa alaikum salam. And Joshi says, love from India. We are sending you love and we appreciate your loving thoughts also. Rahna Liaquat Ali Jani says, we love every religion, inshallah. Yes, because every religion is from God. So we should love every religion, and we should not look at the defects and faults in other religions. We should look at the defects and faults in our own religion and correct them and appreciate the good things in the other religions. That is the recommendation of the great emperor Ashok, the greatest perhaps of Indian rulers, named Ashok. He taught that don't look for the good things in your own religion, look for the bad things in your own religion and correct them. Don't look for the bad things in other religions, look for the good things there and appreciate them. That is the way to peace and harmony. So it's good. Zila Baloch says, I said last time that I'll connect with you on Facebook, but still I didn't.
I will, but after some days, inshallah. Joshi BC 73. Sir, could you tell us what is your thought on afterlife? Uh, Not my thoughts. My thoughts don't matter. But God's thoughts. In every scripture, we are taught that death is not the end, death is the beginning of a new and fuller life. So we should prepare ourselves. Our focus should be on preparing for the next life. Our focus should not be on this life. This life is very temporary. After a few years, it will be over. But what we've done in this lifetime will have great impact on the next life, the afterlife. So we should all remember that and don't get so confused by modern ideas that we forget the afterlife. And thank you for asking about that. The afterlife is the more important. Just like when you go to school, you study in your classes and you take exams. Why? Because with an education, you can go out in the world and work. If you just went to school and then you got your graduation, you didn't even think about what will happen after school. You didn't prepare for after school. That would be foolish. School is just a preparation for life after the school. So in the same way, this life is just a preparation for the real life, which is the afterlife. So that's my thoughts about the afterlife. Imran Riaz says, मुझे तमाम इंसानों से प्यार है, चाहे किसी भी रिलीजन के हों. हाँ, शुक्रिया. ये ज़रूरी है कि हम समझ लें कि हम सब इंसान हम एक ही ख़ानदान के भाई बहन हैं, सबसे प्यार करना है. शुक्रिया. Zila Baloch says, your background looked mysterious, like everything is made up of wood, is it? Yes, this is this is wood paneling, and this house is made of wood, and it has wood paneling. Okay, thank you all very, very much. Please continue praying. Prayer is the first step you can do. Try to understand how powerful prayer is. Prayer will bring about action. Sincere prayer from the depths of the heart. It must be very sincere prayer. So please pray. This is my request. Please pray to God that your little desire can be expanded and increased. What desire? To draw nearer to God, draw nearer to your fellow human beings, and establish self-sufficient village communities where we grow our own food and we work together as members of one family and we escape from the hellish so-called civilized life of modern humanity, especially in cities. The satanic forces are trying to get people to move out of the country into the cities, and they're succeeding because in cities they can control us more. But we want to get away the opposite. We want to get away from the cities, away from the satanic control, and live in villages where life can be very peaceful and we can cooperate in a simple way with our neighbors and work together to grow our own food, grow cotton to prepare our own clothes, spinning thread and weaving on hand looms. This is essential. Okay. So I'll take one or two more comments. Joshi BC73, sure, keep coming on YouTube Live. I have many questions on universal truth. Thank you very much. We will try to come on at the same time every week, every Saturday, inshallah. Saika Naim says, Babaji, should we move from overseas back to Pakistan? Please guide us. Yes. I have always recommended that to Pakistanis. Don't come to the West. Don't think you'll make more money and become happy. You'll make more money and become more sad and entangled and in anxiety. If you're overseas, yes, move back to Pakistan, not just to Pakistan, move to a village in Pakistan and develop a community where you grow your own food independently of the city life, independently of modern so-called civilization. A very, very simple life. That's going to become more and more obvious that that will be required. Otherwise, it will be more and more difficult to live peacefully in cities as the satanic forces become more and more powerful and control more and more. It's horrible. So, yes, I recommend you move back to Pakistan and
not to a city. Of course, if your family is in a city, that's okay, move there first, but then very quickly go out and find some village nearby and work together with the villagers to help them, encourage them. Don't try to become like the cities. Help us become like you villagers, where we live a simple life and grow our own food. Okay, I'm not reading all the comments now, but Safari Sarari says, agreed 100% right. Sincerely praying day and night in the month of Zilhaj. Thank you. Hafsa Pathan, every time also, uh, says, Hafsa Pathan says, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Sir, mere liye dua kare zarur. Am single. Her mother facing very difficulties from my own brother in his wife and from family. Oh Allah, please bless Hafsa Pathan and her mother. Don't worry. Allah will help you. Just pray, keep praying. And I am praying for you. And everyone can pray for her, and that Allah will give her intelligence and mercy and guidance how to live in a self-sufficient village community. That's my prayer for you. Go out into the village and meet some people who will, they will help protect you from your brother and his wife too. But I recommend everybody, if you're in a city, go out and live in a village and establish friendships with simple villagers who will help you live the way they live. Don't try to make them live the way you live. Okay, Shiva Hassan says, Jazakallah khair, Babaji. I am following you from my heart from last year, trying to tell family to move, but hard to convince people. Well, keep trying and keep praying. Thank you very much for your efforts. Yes, it's hard because people are so bewildered by the modern so-called civilization. They think it's better, more progressive to live in the city, more advanced. It's not. It's hellish. Okay, Rana Liaqat Johnny goes on, what I am doing for my life on right path before death. Pray, especially zikr, and live in a simple village community where you can grow your own food. That's what I'm recommending. That's the right path before death. It's getting more and more hard to, and impossible really, in the cities to live the right way of life. It was much easier in the village. Jamil Abbasi says, Assalamu alaikum, sir. काफ़ी दिनों बाद आपका दीदार हो रहा है. ओके, वो शुक्रिया कि आप आए हैं हमारे चैट में, और मेहरबानी करके आप दुआ करें. जो बात मैं आज कर रहा हूँ इसको आप सुने और दुआ करें कि आप भी कर सकेंगे, कि गांव में रहकर अपने गांव वालों के साथ दोस्ती करें और उनके साथ उनसे सीख लें कैसे हम अपने खाना जो ज़रूरी है हमारे लिए, हम अपने गांव को सब तैयार करें. और कपास या ज़रूरी वो भी गांव में तैयार किया जाए, ये ज़रूरी है. ओके, शुक्रिया. खुश रहो. अल्लाह मालिक है. दुआ करो और कोशिश करो कि शहर से निकलो और गांव में रहो और गांव वालों के साथ शांत रहो. ये नहीं कि आसानी होगा, मुश्किल है, लेकिन खुशी ज़िंदगी है गांव में. Hamna Shamim, can you pray for me? I cannot do it wholeheartedly. I feel like my heart is dead. I pray, oh God, please let Hamna Shamim pray from the heart. Give her that. Or give him that. I'm not sure Hamna is a man or woman's name, but please, oh God, give that sincerity of heart that he or she may pray from the depths of the heart. Allah, Allah, Allah. Just cry like a baby. You should be desperate. We must be desperate. Like a baby cries for its mother. We must cry to Allah. Please help us, and He will, certainly. Okay, thank you very much. May God protect us all. Allah.